हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस। हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज शुरू किया हुआ है। उसमें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 4 टॉपिक्स पे एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। आज हम 5th टॉपिक पर एमसीक्यूज देखेंगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in Q factor meters which of the following damping methods is used? इसके ऑप्शन है A एडी करंट डैम्पिंग, B फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, C एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड D ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है C एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। in Q factor meters air friction damping is used. Okay. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स इज। के ऑप्शन है A यूनिफॉर्म, B cramped at lower end and open at higher end, C open at lower end and cramped at higher end and D any of the above। इसका आंसर है B cramped at lower end and open at higher end. Okay, the scale of hot wire instruments is cramped at lower end and open at higher end. इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, the 3 wattmeter method of power measurement can be used in। इसके ऑप्शन है A balanced circuit, B unbalanced circuits, C both balanced and unbalanced circuits and D none of the above। इसका आंसर है C both balanced and unbalanced circuit। The 3 wattmeter method of power measurement can be used in both balanced and unbalanced circuits. Okay. इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, a DC voltmeter has the sensitivity of 1000 ohm per volt when it measures half scale value in range of 100 volt, then the current flowing through this voltmeter will be। इसके ऑप्शन है A 50 milliampere, B 0.5 milliampere, C 100 milliampere and D 1 milliampere। इसका आंसर है B 0.5 milliampere. The current flowing through a voltmeter with sensitivity 1000 ohm per volt when it measures half scale value in range of 100 volt is 0.5 milliampere. Okay. इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, which of the following meters is an integrating type instrument। इसके ऑप्शन है A watt meter, B energy meter, C power factor meter and D none of the above। इसका आंसर है B energy meter। Energy meter is an integrating type instrument. Okay. इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, which of the following AC bridges is preferred for the measurement of inductance with high Q factor। इसके ऑप्शन है A Hay bridge, B Maxwell bridge, C D salty bridge and D Wayne bridge। इसका आंसर है B Maxwell bridge। Maxwell bridge is an AC bridge which is preferred for the measurement of inductance with high quality factor or high Q factor. Okay. इसके बाद हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, a swamping resistance is used to compensate the errors due to। इसके ऑप्शन है A stray magnetic field, B large supply frequency, C large supply voltage and D temperature variations। इसका आंसर है D temperature variations। Swamping resistance is used to compensate the errors which are caused due to temperature variations. Okay. इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर। इसके ऑप्शन है A हाई रेजिस्टेंस, B हाई फ्रीक्वेंसी, C हाई करंट एंड D हाई वोल्टेज। इसका आंसर है A हाई रेजिस्टेंस। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर हाई रेजिस्टेंस. ओके. इसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स पोसेसेस लीस्ट रेजिस्टिविटी। इसके ऑप्शन से A आयरन, B मैंगनीज, C एल्यूमिनियम एंड D कॉपर। इसका आंसर है D कॉपर। सो कॉपर इज अ मटेरियल दैट पोसेसेस लीस्ट रेजिस्टिविटी. ओके.
इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ मैंगनीज इज। इसके ऑप्शन है ए नेग्लिजिबली स्मॉल, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव एंड डी कांट सी। इसका आंसर है ए नेग्लिजिबली स्मॉल। So the temperature coefficient of resistance in manganese is negligibly small. Okay. So हमारा 11th question है which of the following types of instruments suffers from errors due to magnetic hysteresis? इसके ऑप्शन है A induction type instrument, B electrodynamic type instrument, C MI type instrument that is moving ion type instruments, and D PMCC type instrument means permanent magnet moving coil type instruments. Okay, so इसका आंसर है C MI type instruments means moving ion type instruments. Okay, so moving type of instruments suffer from error due to magnetic hysteresis. Okay, इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है which of the following does not employ a null method for measurement? इसके ऑप्शन है A मेगर, B DC पोटेंशियोमीटर, C AC पोटेंशियोमीटर एंड D केल्विन डबल वेज। तो इसका आंसर है A मेगर। सो मेगर does not employ a null method for measurement. ओके, इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर व्हाट इज डन। इसके ऑप्शन से A लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, B लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, C हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड D हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसका आंसर है C हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। So to increase the range of a voltmeter, a high resistance is connected in series. इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है when 2 meters X and Y require 40 milliampere and 50 milliampere respectively for full scale deflection, then which of the following statements is true? A. Both X and Y are equally sensitive. B. X is more sensitive than Y. C. Y is more sensitive than X. And D. Data is insufficient to comment. इसका आंसर है B. X is more sensitive than Y. Okay. So when 2 meters X and Y with require 40 milliampere and 50 milliampere respectively for full scale deflection, then X is more sensitive than Y. इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रिंग्स आर यूज टू। इसके ऑप्शन है A कंडक्ट द करंट टू कॉइल्स, B होल्ड द पाइवट इन पोजीशन, C कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट एंड D ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है C कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट। ओके, सो इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रिंग्स आर यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट। ओके, इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स। इसके ऑप्शन है A टर्मिनल साइज, B पॉइंटर, C रेंज एंड D स्केल। तो इसका आंसर है D स्केल। सो मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयन दैट इज MC and MI instruments can be distinguished by observing its स्केल। ओके, इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन है अ डायनामोमीटर वैटमीटर यूजुअली रिस्पॉन्ड्स टू। इसके ऑप्शन से A एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, B पीक वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, C एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर एंड D पीक वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। तो इसका आंसर है A एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। Okay, so a dynamometer wattmeter usually responds to average value of active power. Okay, इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज टू मेजर। इसके ऑप्शन है A हाई AC वोल्टेज, B हाई DC वोल्टेज, C बोथ AC एंड DC वोल्टेज एंड D एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है A हाई AC voltage. So potential transformers are used to measure high AC voltage. Okay.
that is high alternating voltage. इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है a technique of adding precise amount time between the trigger point and the beginning of scope skip in a CRO, that is cathode ray oscilloscope, is known as. इसके ऑप्शन से A free running sweep, B delayed sweep, C triggered sweep and D non sawtooth sweep. So इसका आंसर है B delayed sweep. So the process of adding precise amount time between the trigger point and beginning of scope sweep in a CRO or cathode ray oscilloscope is known as delayed sweep. Okay. इसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन है एन हाउसहोल्ड एनर्जी मीटर. इसके ऑप्शन से ए रिकॉर्डिंग, बी इंडिकेटिंग, सी इंटीग्रेटिंग एंड डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है सी इंटीग्रेटिंग. सो एन हाउसहोल्ड एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग टाइप. ओके. Please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.